and welcome to Oliveboard. My name is Hardik Mishra and this is a very important session for all those aspirants who want to improve their reading comprehension. A very important session for everybody whoever wants to improve his reading comprehension. So guys and girls, I would request all of you to please make sure to like this session, share it with your friends, and make this session a very successful session. This can only be done if you will like and share this session. So let's just quickly, without any further delay, let's just quickly start this session. But before we start, I would request all of you to please like, share and subscribe, and also don't forget to press the like button, because if you will not press the like button, how will you receive the notifications? Okay, so let's just get started. And as you can see on your screen, this is the SBI PO batch, which has because SBI PO vacancies are already they have been released, and I hope all of you have already filled the forms also. मुझे लगता है सभी ने यहाँ पर फॉर्म्स भी भर दिए होंगे. जिन्होंने नहीं भरे भैया जल्दी भर दो, फिर बाद में मत कहना कि नहीं भर पाए. ये सब ये सारे फीचर्स हैं अगर आप SBI PO सक्सेस बैच ज्वाइन करते हो. 100% श्योरिटी है, अश्योरेंस ऑफ सक्सेस है. 50+ आवर्स ऑफ लाइव क्लास प्लस PDF, सारे क्लासेस के PDF जरूर मिलेंगे आपको. 60+ लाइव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे. स्पेशल फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम होता है, एंड आई अश्योर एवरीवन कि जरूर से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा. टॉपर्स के द्वारा सेशन मिलेंगे. टॉपर्स विल असिस्ट यू इन अचीविंग योर गोल. 25+ लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे. लाइव प्रैक्टिस सेशंस लाइव क्लासेस से अलग होते हैं, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर. प्रीलिम्स और 10 मॉक्स मेंस के मिलेंगे. उसके बाद 90 सेक्शनल टेस्ट भी होंगे यहाँ पर, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के होंगे. स्पेशल टेक्स्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस टू SBI PO रिक्रूटमेंट ड्रिल. ये सारी चीजें और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स ओनली ऑन Oliveboard. ठीक है, आएंगे थोड़ी देर में, अपडेट हो जाएंगे. डू नॉट वरी एट ऑल. अभी फोकस करते हैं, ठीक है. जिन लोगों को मनी बैक कोर्स लेना है वो 2499 में ले सकते हैं, बिकॉज मनी बैक कोर्स इज refundable if you do not qualify the exam. So without any further delay, let's just get started with the most awaited and the most important session and the most important question type of your examination, which is reading comprehension. देखो, if we talk about reading comprehension, अगर prelims में बात कर लेते हैं, ठीक है. prelims की बात करें तो prelims में minimum 5 questions, minimum I'm talking only minimum 5 questions and maximum 8 questions. अब 10 नहीं आते, पहले 10 आते थे, बट अब maximum 8 questions prelims में आते हैं. और single one paragraph, one passage is given. Okay, one passage is given. If we talk about mains examination, if we talk about mains you have 2 passage at least. Okay, 2 passages will be there, and each passage would have at least 8 to 9 questions. Okay, 8 to 9 questions, which constitutes or which make up to around 17 to 18 questions. 17 to 18 questions are given over there. So see, you can see very well that how important this is. Yes, we are coming to the trick. First we will discuss in detail, and then I am going to come up with the trick also, guys and girls. You will just rock it when you will see things in the exam. So just wait for the things to come. Just let me explain everything in detail, so that you don't feel like this thing is missing. Okay, I hope this is clear to all of you. So direct and indirect, these are 2 types of questions. Direct questions are what? Direct questions are fact based, true not true, and synonym antonyms. Okay, direct questions are fact based, true not true, and synonym and antonyms. And if we talk about indirect are inference based, assumption based, tone based, title of the passage, agree or not agree. This is also one important type. Primary purpose and central idea of the passage. So these are the indirect questions. Obviously direct questions are easy, I would say very easy to easy, and indirect questions are moderate to difficult. Okay, moderate to difficult. If we talk about prelims, they are never difficult, they are always always moderate.
the direct questions are always easy if they are asked in prelims or mains. And if we talk about the mains examination, so they can be they can be difficult also. So let's just see. अब यहाँ पर बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. सी इन्फरेंस क्या होता है. सबसे पहले तो व्हाट इज इन्फरेंस. इन्फरेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच मस्ट बी ट्रू इफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज ट्रू. अब कहने का क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल इफ आई से, अगर मैं कहता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाएगा. ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू जस्ट ग्रास्प व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जो भी whomsoever is watching this video will get good results and will improve, eventually improve its reading comprehension. And if I say Berlin is watching, okay, Berlin is watching Berlin is watching this particular video, so what is the inference? The inference is that Berlin will eventually improve his reading comprehension. समझ में आया inference? फिर से बताता हूं कि अगर किसी ने अपना जो भी ये वीडियो देख रहा है उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा, और बर्लिन ये वीडियो देख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ इन्फ्रेंस, कि इन्फ्रेंस ये हुआ कि बर्लिन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड अजम्पशन की बात करते हैं. व्हाट इज अजम्पशन. अजम्पशन का मतलब ये हो जाता है, अजम्पशन इज अ स्टेटमेंट व्हिच मस्ट बी ट्रू फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू. फॉर एग्जांपल इफ आई से कि whoever is watching this video will improve his reading comprehension, Berlin get the notification on Facebook. Okay, Berlin got this notification on Facebook and Berlin is watching this video. अब इसका assumption क्या हो सकता है. ठीक है, इसका assumption क्या हो सकता है कि बर्लिन अपने जितने भी Facebook नोटिफिकेशन होते हैं उनको हमेशा देखता है. जरूरी नहीं है. देखिए, assumption को आप कभी भी लॉजिकली डिड्यूस नहीं कर सकते. वो एक assumption है, वो आप assume कर रहे हैं, वो लॉजिकली डिड्यूस नहीं हो सकता, बट इन्फ्रेंस हमेशा लॉजिकली डिड्यूस होता है. टोन की बात करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द टोन, टोन क्या होता है. ऑथर का फीलिंग, ऑथर क्या सोचकर और क्या फील करके जो है यहां पर जो लिख रहा है उस पैसेज को, दैट इज कॉल्ड द टोन ऑफ द पैसेज. ओके, समझ में आया. प्राइमरी पर्पस की बात करते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस. तो प्राइमरी पर्पस के क्या मतलब हो जाता है, जो भी मोटिव है, whatever is the motive of the author, ऑथर क्या सोचकर लिख रहा है, उसका क्या मोटिव है. क्या वो अवेयरनेस फैलाना चाहता है, क्या वो सजेस्ट करना चाहता है, क्या वो क्या वो कॉशियस करना चाहता है, क्या वो कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है, क्या वो अपने इमोशंस को बताना चाहता है, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, दोज थिंग्स आर कॉल्ड प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज. सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज बेसिकली द थीम. Yeah, Vikas is saying there is no such thing like trick. Just wait for it. Just wait for it for some time and you will get to know. Central idea is the theme of the passage, and title is what? Title is the concise form of the theme. Okay, to write the theme in shorter format is called in as less words as possible. That is basically called as the theme of the or the title of the passage. Before moving towards reading comprehension, let's just discuss a very important thing, which is how to improve your reading skills. Okay, a lot of people get confused, how to, and lot of people want the answer of this question, that how to improve their reading skills, because if you do not have reading skills, good reading skills, you will never be able to improve your reading comprehension. Mark my words. So first thing, okay, yeah, RC techniques, these RC we will discuss them in detail. विशाल, हम वहां पर जो बैच में हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. डू नॉट वरी, डिटेल में. अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स बता रहा हूं. जब हम बैच में, जो बैच पेड बैच होगा, वहां पर हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे. ठीक है, वहां पर सारी चीजें हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूं. वहां पर हम 1-to-1 बैठेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो रहा होगा, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस ओवर देयर. सो रीड 3 articles. I am not saying more than 3 or less than 3. Just 3 articles every day, which is of 300 to 400 words. So how you need to do? Solve one passage, one reading comprehension. Now your one article is done. Read one from the editorial or from the whichever newspaper you want. Okay. Don't be vocal while reading. That means do not
do not open your mouth while you're reading. Don't utter any single word. That means to be vocal. Okay, 1 RC from mock, 1 from newspaper. Prefer editorial, but if you do not want to read editorial, you can ठीक है, if you do not want to read editorial, in that case what you can do, you can read any of the article in the newspaper. One from newspaper, I'm just writing newspaper. Okay, and one would be from any book or any magazine or any quiz that you're solving. So it should be a mix of these things. So if you are reading 3 passages every day, you will improve. And do not follow anybody. Okay, why not be vocal? Ramya is asking, why not be vocal? A very important question. Because when you speak, your reading your reading speed decreases. That is the key. Because when you speak, when you open your mouth, your speed decreases. So see, this is all the game of how fast you read. So that it is all the game of reading fast, as fast as possible. So if you are vocalizing, if you are reading, if you are opening your mouth, in that case what will happen? Okay, so it should be what? It should be basically that you should read every single line without opening your mouth. Don't repeat any sentence. A lot of people say that it takes a lot of time when we are reading passage. Why? Because you people do what you do. You people read every single sentence multiple times, once, twice, thrice. So if you assume that the paragraph is of 400 words, and you read each sentence twice, it will become of 800. If you read each sentence thrice, it will become of 1200. So the passage is not very, very lengthy, because all of us read sentences multiple times, because we vocalize the sentences, vocalize while we are reading. That is what makes the paragraph lengthy. This is the trick. This is the trick of reading the passage. A lot of people were saying that there is no trick. This is the trick. This is the hack. Nobody will tell you across YouTube. You can go out and search. Do not open your mouth. Do not repeat any sentence. Read it with focus. If you are not able to understand, leave that. Comprehension of one single passage will never affect the comprehension of whole your whole paragraph. So do not worry at all. Just keep your mind free and focus on your reading. Do not repeat. I repeat, do not repeat, do not vocalize, and do this thing. Okay, let me just ask all of you, quickly tell me, how many of you feel that on the scale of your 1 to 5, where do you feel that yeah, that is what I am saying, that that is what we are going to work in the paid batch, that you read it once and still you get the whole meaning. That is what we are going to okay, on the scale of 1 to 5, how much you rate your reading skill? How much you rate? Because the next part of the session will be focused on that only. So quickly tell me how much you rate yourself on the scale of 1 to 5 when it comes to okay, Sushil is saying 2, Mukesh is saying 3. So on the scale of 1 to 5, how much you rate yourself? So Mukesh, if you're okay, 2.5, 4. Pavitra is saying 4. Very good, Pavitra. Shivani is saying 3. See, I can see a lot of people range from 3 and above. Okay, some people are 2 also. Yeah, Shivani, we are going to come with the tone problem also. I have taken a question on tone also. ठीक है विनोद, बिल्कुल टोन पर भी बात करेंगे. टोन पैसेज टोन कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर भी बात करेंगे. उसकी भी ट्रिक लाया हूं मैं आज. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा सेशन होगा. फटाफट से यहां पर सेशन को शेयर कर दो, बहुत मजा आएगा आपको. ठीक है, तो अगर आपकी 2 से कम है, अगर आप अपने आप को 2 से कम रेट करते हैं, दैट मीन्स आप वीक हैं. अगर आप अपने आप को 3 रेट करते हैं, दैट मीन्स आप एवरेज हैं.
और अगर आप अपने आप को 4 या 5 रेट करते हैं दैट मीन्स आप स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो 3 इज एवरेज, लेस देन 2 इज वीक। ओके, सो अज्यूमिंग स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, बिकॉज अगर स्ट्रॉन्ग होते आप, ठीक है, तो आप यहां पर बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हैं तो आप बिल्कुल भी यहां पर नहीं होते। तो अज्यूमिंग कि आप वीक या फिर एवरेज कैटेगरी में आते हैं, अज्यूमिंग कि आप वीक या एवरेज कैटेगरी में आते हैं, लेट्स जस्ट सी कि आपको ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ेगी। जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन अभी तक गलतियां कर रहे थे, ठीक है, ऑल दोस पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग बट स्टिल मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल रीडिंग, this is going to help them also, okay? Okay, so these, if you will follow these things, you will be able to improve your reading skills. Now we will come to trick to solve reading comprehensions in 5 minutes. अब आते हैं हम, now we come up to your how to solve reading comprehension in just 5 minutes. So read the paragraph. Now you will say, what is the trick in that? What is the trick in that? Yes, read the paragraph, but I am going to tell you how to read the paragraph. How to read. First and foremost is scanning. Scanning. What is scanning? Exam hall में enter करने से पहले, before entering the exam hall, all of you read the book, all of you read that course material, right? All of you read that course material just before entering the exam hall. The way you read before and just before entering, just 2 minutes before entering the exam hall, that way of reading is called scanning. That way of reading is called what? It is called scanning. Understood, everyone? So make sure that you are good at scanning. Practice scanning every single day. That means you need to eliminate prepositions, conjunctions, articles, and unnecessary parts of speech. Focus on pronouns, focus on adjectives, focus on adverbs, focus mainly on nouns. Okay, so focus on these. Sometimes you need to focus on conjunctions, not every time. Okay, sometimes you need to focus on conjunctions, not every time. Mostly prepositions and articles should be ignored every single time, and conjunctions should be focused sometimes, not always. Remember this thing. Make note of keywords. See, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Okay, let's once more ask you, what do you feel? You should read the questions first or the answer or the paragraph first? आपको क्या लगता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए या पहले पैराग्राफ पढ़ना चाहिए? What do you feel? You should read the question first or the paragraph first? Yeah, vertical scanning gives us the idea about whether the passage is positive or negative. Yes, definitely. Okay, so tell me question. Vishal is saying question. Okay, Vishal is saying question, Sushil is saying paragraph. See, just like I have two different opinions, one is saying paragraph, the other one is saying question. You know, a lot of people would tell you that you should read the paragraph first. A lot of people would say you should read the question first. Choose whatever you like. Choose whatever you like, because for some questions you need to read the question first, and for the remaining you need to read the paragraph first. So for direct questions you can read the question first, and for indirect ones you need to read the paragraph first. Okay, understood? I hope this is very very clear to all of you guys. ठीक है, I hope कि सबको समझ में आ गया होगा. डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, और फिर जो है आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए हमेशा जो है पहले पैसेज पढ़ना चाहिए, बिकॉज पहले क्वेश्चन पढ़ के कोई भी फायदा नहीं होता है. और सबसे पहले तीसरी ट्रिक ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर लो. अब बात कर लेते हैं 5 मिनट में हाउ विल यू बी एबल टू सॉल्व द पैराग्राफ जस्ट इन 5 मिनट्स. So assuming that there are 8 questions, out of which 2 will be of synonyms and antonyms. How many seconds do you feel that it will take to solve synonym antonym questions? How many seconds do you feel?
How many seconds do you feel that it will take for you to read the to solve synonym antonyms questions? I suppose to solve two questions of one of synonym and the other one of antonym, or even three, it should not take more than 15 seconds. Yeah. Benjamin, George Benjamin, not even 20 seconds, 15 seconds, 5 seconds per question. Less than 30 seconds, I am talking only 15 seconds. And this you should, what you should go? You should go and see the question. If the word is asked for synonym or the antonym, go out in the passage, read that sentence only and find out the meaning. Because वहां पर in that particular sentence, in that particular passage, the question is asked for contextual meaning. contextual meaning के बारे में बोल रहा होता है, डायरेक्ट मीनिंग के बारे में नहीं बोल रहा होता है. contextual meaning क्या होता है अभी उसके बारे में हम बात करेंगे. समझ में आ गया? उसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने चाहिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए, ठीक है, और सारी चीजें इस तरीके से करनी चाहिए. इन दैट वे यू विल बी एबल टू सॉल्व द पैराग्राफ इन 5 मिनट्स. क्यों कह रहा हूं मैं ये सब 5 मिनट में? क्योंकि आपके पास यू विल ओनली हैव 2 मिनट्स फॉर रीडिंग द पैराग्राफ. 2 मिनट्स फॉर रीडिंग. You don't have more than 2 minutes for reading the passage. Okay, for reading the passage you only have how many minutes? You only have 2 minutes, not more than 2 minutes under any circumstances, and 3 minutes for solving the questions. Okay, 2 minutes for reading the passage and 3 minutes for solving the questions. Okay, I hope this is clear. And how will it be? It will be, if you will follow my tips for reading, improving your reading skills for next 40 days. If you will follow my reading skills for next 40 days, you will definitely be able to read the passage in just 2 minutes. Okay, so now we are on this particular passage. Quickly read this passage and we will come to the questions. Okay, फटाफट से यहाँ पर read करिए passage को और जल्दी से मुझे यहाँ पर हम इसके बाद questions पर आएंगे. Okay, yeah. Average length of the passage. Okay, let me just hide myself so that you can properly see the passage. Not considering the length of the passage, the length of the passage will not be more than 400 words, so do not worry about that. Yeah, Shivani is saying कि कुछ sentences को पढ़ने में time लग जाता है. Dear, do not worry at all. Time लग जाता है तो कोई बात नहीं, आपको उस सेंटेंस को फोकस के साथ पढ़ना है. अगर समझ में नहीं आया तो जस्ट लीव इट, जस्ट डू नॉट फोकस ऑन इट. अगर वो समझ में नहीं आया है तो इट इज नॉट समथिंग टू वरी अबाउट. यू कैन जस्ट स्किप इट. ओके, यू कैन जस्ट स्किप दैट पर्टिकुलर सेंटेंस एंड जस्ट मूव ऑन. आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड गाइज एंड गर्ल्स, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज शेयर दिस सेशन विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. ठीक है, एक ही बार पढ़ना है आपको. नहीं, प्रशांत इज वेलकम, बिल्कुल सही है वहां पे. Okay, Ashish is saying done. ठीक है, I hope all of you are also done with the passage. Is everyone done with the passage or still somebody is reading? Yeah. Okay, the remaining passage is over here. The remaining passage is over here. I hope this is also done. Okay, so can we move to the questions now?
Can we now move to the questions if you're done with the passage? Okay. So shall we move to the passage now? Sorry, questions now. See, one more thing that you need to keep in mind, that why have I asked you to read the passage first? Because I have taken all the indirect questions. Okay. So as I've already told you that you need to read the passage first if you are solving the indirect questions. So for that purpose, okay. So what is the meaning of the Dumbskull sword? Now this one is basically an indirect question, but it's okay. This is the only indirect question that was there. So what is the meaning of Dumbskull sword? Now, considering that this is a direct question, what is the meaning of Dumbskull sword? You just need to go over here. The government's move to infuse upfront an additional capital of 70,000 crore into public sector bank is welcome. The promised removal of Dumbskull sword is of punitive investigation. So Dumbskull sword is imminent danger, a danger which is always, जिसको हिंदी में कहते हैं ना तलवार लटकती रहती है. That is answer is option number 3. Very good. See, this is this is how you solve it. This is how easy this the question is. Okay, so this is a direct question. इसीलिए मैं कहता हूँ idioms पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि idioms अब पूछे जाने लग गए हैं exams में. Next is, what is the tone of the passage? Okay, now come to the trick for solving tone of the passage. Now let's come to the passage. I will tell you how to find out the tone of the passage. Always make sure to focus on the first sentence and the last sentence of each paragraph. Okay, each paragraph, focus on the first sentence, first line basically, and the second line, first and the last line of the paragraph. First and the last line of the paragraph will eventually tell you the tone of the passage. Always remember. ठीक है, first and the last line of each paragraph will tell you the tone of the passage. अब यहां पर देख लीजिए क्या बोल रहा है. Government's move to infuse upfront an additional capital of 70,000 crore into public sector is welcome. That means he is happy. लास्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर तो पूरा ही बहुत बड़ा सा सेंटेंस है, बट इट्स ओके. द प्रॉमिस रिमूवल ऑफ डम्स्कल स्वॉर्ड प्यूनिटिव इन्वेस्टिगेशन हैंगिंग ओवर देयर हेड्स of bankers today will help. It will help. Removal will help. That means he's happy. The moves to support non-banking financial such as enhancing additional liquidity, things like that. He's in every sentence. In every sentence you will read, you will find that the author is very, tones are of a lot of types. There are many types of tones. Broadly, if you will divide, there are 3 types of tones: positive, negative, and neutral. Broadly, if you will divide, there are 3 types of tones: positive, negative, and neutral. So everywhere, if you will read, making banks link their lending report, it will help better. So yeah. So under positive, Chaitanya, there are a lot of tones. Under positive, there are a lot of tones. Okay. Steps such as further development of this, facilitating, increasing, he is very, very happy. He is very optimistic about everything. Acerbic means very, very harsh. Vitriolic also means harsh. Indignant means someone who is very irritated. Belligerent means also very, criticizing and very, very, yeah. I hope this is clear to all of you guys. कि यहाँ पर ये सारे टोन्स नहीं हो सकते because all these tones are negative. So your answer is none of these. I hope Chaitanya you've understood this particular question. So अगर हमसे पूछा जाए कि टोन कैसी है, तो टोन बहुत ही पहले तो पॉजिटिव है. अब पॉजिटिव में कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक is this tone can be optimistic because he is optimistic, or he is very, very happy about it. So joyous also, applauding, because he is appreciating things. So I hope this is clear to you. Is it clear? Who was asking? I think a lot of people were asking about tones. So Shivani, I hope this is clear to you कि how to find out the tone of the passage. Yeah. चैतन्य सजेस्टिव इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहां पर सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ में, छोटे से 2 लाइन में सिर्फ उसने सजेस्ट किया है. अदरवाइज हर जगह वो सिर्फ अप्रिशिएट ही करता रहा है. ठीक है, इन द होल पैराग्राफ ही वाज जस्ट अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग एंड ही वाज नॉट एट ऑल ही वाज नॉट suggesting
a lot of things in the whole paragraph. In just a few 2 to 3 lines he was suggesting. Apart from that, he was just appreciating in the whole paragraph. So I hope this is clear. Quickly tell me if this is clear, if the tone thing is clear to all of you or not. If things clear to yeah, is it clear to all of you or not? He's happy, optimistic, applauding, laudatory tone. Basically applauding is laudatory, tone is laudatory. Yeah, so I hope this is clear to all of you. Okay, let's move to the next question. Which can be the suitable title for the passage? Prashant Dwivedi is saying that we must be optimistic in every situation. Yes, always remember, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. Whatever happens, happens for good. Okay, so can you tell me what is the title of this passage? Can you tell me what is the title of this passage? Okay, Yaman Maurya is saying the option number 3. Relevance of data mining in banking. Is it talking actually about data mining only? No, not at all. Transmission of monetary policy. Is it talking about monetary policy? Never. Offshore rupee derivative markets? No. It was just, see, offshore rupee derivative, it is being talked about over here only. So something which is being talked about only in one paragraph cannot be the title of the passage. Transmission of monetary policy. What is the transmission of monetary policy? No, it was also just given in 1 or 2 lines. Data mining is also given in 1 or 2 lines. Money infused in banking sector also cannot be. Clearance of to take off the stalled credit. जो फंसा हुआ पैसा है. See, वो जो आप कह रहे हैं जो ऑप्शन नंबर 2 है वो तो सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है. जो कि स्टॉल्ड, जो कि रुका हुआ पैसा, उसका फ्लो कैसे क्लियर करना है उसके बारे में पूरा पैराग्राफ बात कर रहा है. या SBI PO का प्री का बैच, प्री और मेंस का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. यू कैन परचेज फ्रॉम Oliveboard's वेबसाइट. डियर दिनेश, यू कैन परचेज फ्रॉम Oliveboard's वेबसाइट. क्लियर एवरीवन? सो वो क्लियरेंस की बात कर रहा है और वो हर जगह उसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि डेरिवेटिव मार्केट से कैसे कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन से कैसे कर सकते हैं, डेटा माइनिंग की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, जो कि मनी इन्फ्यूज किया उससे उसकी हेल्प से कह सकते हैं. तो पूरे जगह हर जगह जो है उसी के बारे में बात की गई है. तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियरेंस ऑफ to take off for stalled credit. Okay, so that is being talked about in this whole paragraph. I hope this is clear to all of you. Clear everyone? Quickly tell me if this is clear to you or not. Okay, so I hope this is clear. Okay, now we come to this one. This is the last question that we have. Which of the following statements would the author most likely agree? सबसे ज्यादा agree किससे करेगा? ठीक है. Yeah, you can buy the batch from app also. Yes, you can buy. Yeah. Yes, Pavitra, I am going to teach. I will teach the Hindi batch. The bilingual batch on in SBI PO, definitely. With which of the following statements would the author most likely agree? One-time settlement policy will benefit MSME is impractical. See, over here it is saying, if you can see, over here is saying pragmatic, which means practical, and over here it is saying impractical, which is wrong. So the first option is wrong. Banks have not yet developed the required proficiency in judging. Yes, this is what it is saying. See, this is not directly mentioned over here. Bank must also acquire the expertise. See, this is an inference based question. Okay, if you can focus over here, what it is saying, that banks must also acquire expertise to access MSME loan viability and invest in data mining. That means they still do not have that. Okay, so they still do not have that. So that means this should be the answer. Banks have huge investment in data mining? No, not at all. So your answer is option number 2. Is it clear to all of you or not? Quickly tell me, is it clear? And have you understood how to solve such questions?
How to solve? Can you tell me, if you would be solving it alone, how much time would you would have taken? I don't think more than 7 minutes. I don't think more than 7 minutes. My assumption is, if you would have been solving this whole paragraph for, you know, uh, alone, you would not have taken more than 7 minutes, given you would have followed what I have told you, given you would have told what yeah, definitely पेड बैच की पीडीएफ्स हमेशा मिलती रहेंगी. Okay, one more question a lot of people ask me is कि सर कब अटेम्प्ट करना चाहिए? Starting, when to attempt the RC passage? Starting, mid, or in the end? What is your opinion in this? When you should be attempting the reading comprehension? In the starting, in the end, or in the mid? Can you tell me? A lot of people ask me this question, that when we should attempt the reading comprehension question, in the starting, in the middle of the sentence, in the middle of the paper, or in the end of the paper. When? Okay, Ruchi says end, Anupama says mid, Mona Kumari says mid. Okay, so a very easy question, very easy answer to this particular question is this. If you are very good at writing, if you are very good at reading, doesn't matter if you rate, see, in the beginning I asked you how much you rate yourself. So if you rate yourself 4 to 5, it doesn't matter at all if you attempt it in starting, in the mid, or in the end. Doesn't matter at all. If you rate yourself 2 to 3, I hope nobody would rate themselves 1, because if you rate yourself 1, that means you do not know how to read. Okay, that means you're not able to read English. So if you are, if you rate yourself 2 to 3, in between 2 and 3, then what you should do, you should attempt the passage in the starting. If you rate yourself between 2 to 3, then you should attempt the passage in the very beginning of the passage. Why am I saying so? A very strong reason for this, because you might take more than 5 minutes also, even after practicing. Okay, and how many minutes? 7 minutes. Though I don't want you to go beyond 5 minutes, but still, you might find on that particular day the passage difficult, and you end up wasting 2 more minutes. So because keeping that thing in mind, I would recommend you to attempt the passage in the very beginning. But what you will do, you will first solve synonym antonyms, then you will solve fact-based questions, then you will solve true not true. So 2 questions over here, 1 question is over here, and 1 question over here. So out of, if 8 questions are asked, you have already solved 4 questions in less than 2 minutes. See, 4 questions in less than 2 minutes. Okay, clear? This means you have solved 4 questions in less than 2 minutes. अब इससे ज्यादा क्या ही लोगे, ठीक है? And 4 marks आ गए हैं और 2 मिनट हुआ है बस. Sneha Singh, that is why am I saying so that you should attempt the reading comprehension question very first, because ये तो बिल्कुल ऐसा है कि ढूंढ सको तो ढूंढ लो, सामने दिया होता है. The answer is given in the passage only. You do not need to go anywhere. See, reading comprehension is always a gamble. You might get it right, you might not get it right. But parajumble is always a gamble, not reading comprehension. Parajumble is always a gamble. You might get it right, you might get it wrong. But reading comprehension is sure shot, 100% accuracy question. If you will attempt it, you will definitely score good marks. So what am I saying? Direct questions, that means synonyms, antonyms first, fact-based second, true not true third. True not true third. And see, this is something I religiously follow always, something, because I always follow this thing. That's why I am always able to attempt
30 questions in prelims every time. Every time I am able to attempt 30 questions with 100% accuracy, because since the time I have been preparing, मैंने भी यही सारी चीजें फॉलो की हैं और आज भी फॉलो करता हूं. सबसे पहले synonym antonyms, फिर fact based, फिर not true. This hardly takes 2 minutes of mine. Okay, hardly takes 2 minutes of mine. Okay, Sachin Garg is saying, Sir ji, SBI PO success batch में तो only 3 subjects हैं, general awareness तो है ही नहीं करा रहे हैं. SBI is only pre batch. This is mains also. प्री खत्म होगा, फिर उसके बाद मेंस के लिए भी मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा. डू नॉट वरी एट ऑल. Okay, one thing, Prashant Dwivedi is asking one thing more, sir, which approach is better, reading passage first then solving question or vice versa? I have already discussed it, Prashant. मैंने पहले ही इसके बारे में बात कर ली है. डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पैसेज पढ़ो, और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है उनके लिए पहले पैसेज पढ़ो और फिर क्वेश्चंस पर जाओ. तो ये मैंने पहले ही बता दिया है. फिर से पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको पूरी चीजें अच्छी तरीके से एकदम प्यार से समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए. मीनिंग ऑफ द फ्रेज वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है आप वहां पर कर सकते हैं, और दैट वुड ऑल्सो टेक हार्डली 3 minutes of yours. So in this way, if you will attempt in 3 minutes, you will be able to solve 3 questions. So because 7 or 8 questions are asked, so in 5 minutes you will be able. Sir, give an example of indirect question. Indirect question is the inference question. Like this one is the indirect question. This was the indirect question which is given in front of you. Okay, this was an indirect question. Bank has not yet developed because it is saying कि वो उनको डेवलप करना चाहिए. अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको पढ़ना चाहिए, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका मतलब आप मेरे को ये लग रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. मैं कह रहा हूं कि आपको नौकरी करना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं. वही चीज तो लिखा है कि बैंक्स हैव नॉट येट डेवलप्ड, बैंक्स में डेवलप नहीं किया, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है पैसेज में कि उन्हें डेवलप करना चाहिए. सो आई होप स्नेहा सिंह इज सेइंग दैट शी इज नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. इंग्लिश में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसी के लिए बता रहा हूं कि पहले पैसेज करो. अभी जब आप मॉक्स लगाओगे, केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करिए. जो 7-8 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, पूरा जो है आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगाइए. क्या लिखना है वो समझ नहीं आता है. डिस्क्रिप्टिव, फॉर डिस्क्रिप्टिव यू, दैट इज व्हाट आई हैव सेड, रीड 3 पैसेजेस एवरी डे ऑफ 3 डिफरेंट टॉपिक्स. 3 डिफरेंट टॉपिक्स से रीड करिए, समरी लिखिए उनकी. ठीक है, आप जो भी रीड करते हैं उसकी समरी जरूर लिखिए, बिकॉज समरी लिखेंगे तो आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगी. यू विल बी एबल टू डेवलप योर स्किल्स, योर comprehension if you will write summary of each passage whatever you read. जो भी लिखिए उसकी समरी जरूर लिखिए. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू रीड द समरी ऑफ डिस्क्रिप्टिव का भी क्लास होगा, डेफिनेटली होगा देव्यांश, डेफिनेटली होगा. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की अगर बात कर ले तो डिस्क्रिप्टिव भी कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है. उसकी प्रिपरेशन, डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन सेम है. यू नीड टू रीड फॉर बोथ ऑफ देम. If you are good at reading, you will definitely be able to solve reading comprehension and you will definitely be able to write passage. So is it clear everyone? जल्दी से मुझे बता दो कि ये सर क्लियर हो गया है. एक बारी फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं for all those people who have joined us late. Okay, so see, जिन्होंने भी जो भी लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं फिर से बता देता हूं. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो होते हैं, फैक्ट बेस्ड, ट्रू नॉट ट्रू और सिनोनिम एंटोनिम्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं. इन्फरेंस बेस्ड, असम्पशन बेस्ड, टोन बेस्ड, टाइटल ऑफ द पैसेज, अग्री नॉट अग्री, प्राइमरी पर्पस और सेंट्रल आइडिया क्या हो जाता है? ये इनडायरेक्ट हो जाता है. या रीड, उसके बारे में हम बात कर लेंगे. इन्फरेंस की बात कर लेते हैं. तो इन्फरेंस क्या होता है? जो कि आप लॉजिकली डिड्यूस कर सकें. अज्यूम का मतलब क्या हो जाता है? असम्पशन मतलब जो चीज आप अज्यूम कर रहे हैं. टोन जो भी सेंटिमेंट है, जो भी उसकी फीलिंग है ऑथर की. प्राइमरी पर्पस क्या होता है? मोटिव. सेंट्रल आइडिया क्या होता है? थीम ऑफ द पैसेज. और टाइटल क्या होता है? कंसाइज फॉर्म ऑफ थीम. ठीक है, कंसाइज फॉर्म ऑफ द थीम. टिप्स टू इंप्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स. सी, बिफोर यू इंप्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू मस्ट इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स. उसके लिए आपको हर रोज कम से कम 2 आवर्स तो देने ही चाहिए रीडिंग के लिए. 2 घंटे जरूर दीजिए, which includes your writing the summary of each passage. You make sure that you write the summary of each passage which is given to you. Never vocalize, never open your mouth while you're reading.
रीड विद द हेल्प ऑफ योर आईज, ठीक है, रीड विद द हेल्प ऑफ योर आईज। ओके, दिव्यांश साहब, सर मेंस से पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देना ताकि हम मेंस के पहले उनकी प्रिपरेशन कर लें प्लीज। ओके, सो अगर मैं अभी बता दूं तो कोरोना जो है उसके ऊपर पैसेज लिखने को आ सकता है, वैक्सीन के ऊपर लिखने को आ सकता है, सोशल मीडिया पे लिखने को आ सकता है पैसेज, ठीक है, सोशल मीडिया पे लिखने को आ सकता है, इंपॉर्टेंस सोशल मीडिया का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो फेस्टिवल्स के ऊपर लिखने को आ सकता है, ठीक है, दिस हेट्रेड के ऊपर आ सकता है, जो हमारे कम्युनल हेट्रेड है उस पे आ सकता है, जर्नलिज्म पे बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं तो दिस जर्नलिज्म पे लिखने को आ सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। उस पे बात करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे। डोंट बी वोकल वाइल रीडिंग, ये भी मैंने बताया, और डू नॉट रिपीट एनी सेंटेंस, ये भी मैंने आपको बताया है। ट्रिक्स सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में बताया। कीवर्ड्स लिख लें जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इन्फ्रेंस का, तो बिना पेपर की तरफ देखे जल्दी से ऐसे पॉइंट नंबर 1 जल्दी से ऐसे शॉर्ट नोट्स बना ले, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है, मेक श्योर। लॉकडाउन पे भी आ सकता है डेफिनेटली, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड आई होप you've enjoyed the video. If you have genuinely liked it guys, please and these are the upcoming courses. So अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर आप वेबसाइट पर जाइए और जरूर से इन सारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए if you want to improve yourself, if you want to get selection. So कोई भी नहीं है ऑलिव बोर्ड के अलावा, ठीक है। So that's pretty much from my side for the day. I hope you've enjoyed this session. Please first of all, thanks for watching this video. Please make sure to leave a comment below and like this session. Like करना मत भूलिएगा, जितने लोग भी हैं please make sure that you like this button. ठीक है, सचिन गर्ग, just follow me, keep following me and you will definitely and improve your English. So thanks for everything. Thank you for watching. Subscribe to Oliveboard. That's pretty much from my side for the day. Have a nice day. Please make sure to like, share and subscribe and don't forget to press the like button. Meanwhile, I go and enjoy my weekend. You also keep studying and don't go before watching this advertisement. Thank you. Have a nice day. Enjoy yourself.